Hello everyone, myself Dr. Aditya Gupta. Today I have with me one of my favorite seniors and Dr. Vishnu Koneru. What's unique, the reason I'm doing this interview, this is not a PG interview, this is an SS interview, but the one reason I'm actually doing this interview is that Dr. Vishnu Koneru, hi Koneru, कैसे हो आप? हाय यार ठीक हो। कॉनरू ने मेरे साथ ज्वाइन की थी एमडी इन पीडियाट्रिक्स सो आई ज्वाइन एमडी इन पीडियाट्रिक्स इन एम्स ही ज्वाइन एमडी इन पीडियाट्रिक्स इन पीजी चंडीगढ़ बट द डिफरेंस इज एंड विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेरीज दैट एवरीवन कीप्स ऑन आस्किंग कि इज इट रियली पॉसिबल कि हम लोग एमडी पीडियाट्रिक्स के बाद डीएम अडल्ट ब्रांच में कर सकते हैं और मोर इम्पोर्टेंटली एग्जाम निकले विल वी इवन क्लियर द एग्जाम और नॉट. And today I have with me the very live example of this is A, not only possible, it is possible with flying colors. Dr. Vishnu Koneru has gotten All India rank 3 in INISS in rheumatology, adult rheumatology. And he hadn't gotten a rank, he was also cleared NEET SS with a stupendous rank of 180, 180 था। 12 180. कॉमन। या कॉमन था वो। कॉमन 180. सो ही डिड हिज एमडी इन पीडियाट्रिक्स बट इसके बाद इन्होंने अडल्ट ब्रांचेस में रुमैट जैसी स्पेशलिटी एज कॉम्पिटिटिव एज रुमैट ही क्लियर्ड द एग्जाम विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 3 एंड इन आईएनआईएसएस एंड नीट आल्सो ही गॉट एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 180. सो कांग्रेचुलेशंस कॉनरू, कैसे हो फिर थैंक्स यार। लग रहा है आपको? बढ़िया। हाँ अभी तो यार मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वाज प्राइमरीली प्रिपेयरिंग फॉर नीट असिस हम्म. because the INI is obviously very not only I wouldn't say as much as unpredictable as competitive, because although it is a predictable exam as such, but the number of seats, the sheer number of seats are so less that essentially it's more competitive. तो हाँ तो I wasn't primarily preparing for INI as I had been in my UG and और PG. के लिए प्रिपेयर किया था या आपने? मतलब यूजी और पीजी में आई वाज प्राइमरली फॉर लाइक जो भी एम्स हो या पीजीआई हो ऐसे। बट इस बार आई आई वाज लाइक कि यार नीट दे देता है क्योंकि सीट्स भी कम है और आई वाज शिफ्टिंग फ्रॉम पीड्स टू अडल्ट। तो आई वाज काइंड ऑफ फोकसिंग देयर, बट यू नो एज वी ऑल से मतलब एग्जाम्स में कुछ भी हो सकता है। उस दिन की बात है, अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ वेरिएबल्स कम इन, और मतलब थोड़ा काइंड ऑफ रिवर्स हो गया मेरा प्रेप और रिजल्ट। तो या दिस इज अनदर मोड थिंग वी फॉर कैन। NEET, but you got a much better result in INI. या या So maybe शायद आप एम्स के हो यूजी. A lot of people I'll tell to people he Dr. Koneru, he's an undergraduate of 2011 batch, who is 1 year senior of mine. So don't be offended if I call him Koneru. In names we call these seniors by name. मैं उनको Koneru ही बुलाता हूँ. But I'll give him all the respect. I will still call him up and everything. But नाम से ही बुला रहे होते हैं. So don't be offended about that. So Koneru is a 2011 batch in Zonian, and नीट हमारा सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन हमारा साथ में निकला था. एंड मे बी शायद हो सकता है आईएनआई वाज इजियर फॉर यू बिकॉज यू आर एन अंडर ग्रेजुएट ऑफ दिस प्लेस एंड मे बी सम क्वेश्चंस यू न्यू फ्रॉम. या हो सकता है। या बिकॉज आई ऑब्वियसली लाइक द टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग आईएनआई हैज, ऑल्दो वो काफी ब्लर हो रहे हैं बाउंड्रीज। बट I think the other reason, which again, like people watching can have a takeaway from, is that I gave my NEET essays under extreme pressure. Like I was preparing since almost an year, I think, मतलब at least 9-10 months for that one day. So I was, while we were waiting just before the exam, that half an hour period, there was a drastic difference. The way I was giving NEET and the way I was approaching INI. I almost was having to do Valsalva while waiting through that NEET SS. While in the INI, I was like, ठीक है मेरे को मिल रहा है, मतलब मिल जाएगा, and like you know उस मूड से दिया था। And this actually happened to me in my PG as well, जब I was primarily preparing for AIMS, बट बट मेरा पीसीए वाज पीजीआई हो बेटर गया। बिकॉज यू वेंट विद या आई जस्ट वेंट इन की एम्स में तो मतलब एट दैट पॉइंट वॉट एवर मेरा ठीक था रिजल्ट मेरे उसके लिए, एम्स भी ठीक था। तो और इसमें इवन इन माय यूजी माय एम्स एग्जाम वाज वन ऑफ द लेटर एग्जाम्स, अपना जून 1 को होता था उस टाइम पे, जब तक आर नीट यूजी वॉट एवर एआईपीएमटी वाज डन। वीएमएमसी में मेरा क्लियर हो गया था, एएफएमसी में हो गया था। तो I've only cracked exams when I have been at my गिवन देम एट calmest अ self. लेटर डेट. या सो आई ऑलवेज वाज लाइक कि मेरा मेन एग्जाम जो है वो एक दो एग्जाम बाद हो, मतलब एक एग्जाम बाद हो। तो दैट इज ऑलवेज अ एंजाइटी प्रोबेबली. या मे बी मतलब मेरे को डायरेक्टली फील नहीं होता, बट मे बी एग्जाम सॉल्विंग में मेरा होता होगा ऐसे।
I Yeah, don't know. I think even I did an interview with Zainab also. Zainab said the same thing. Yeah. The reason that her rank was very drastic, rank 1 was rank 100, was simply because of the fact that she gave the exam with a cool mind. And I Chill think attitude, huh? when everyone will agree that when you're giving the exam, even if it's the most important exam of your life, give it with a cool attitude, and you will score better. You will improve your rank rather than giving with the mindset that what will happen or something. Yeah. So I'll ask you this. This is something which everyone will ask basically. Is a coaching necessary for SS, like a UG PG में तो coaching है ही. अब Hmm. I'm now thinking कि SS में coaching necessary है भी या नहीं? A, is it necessary? And B, अगर necessary है या नहीं है, is there any recommendation from your side or whatever it is you want to say? To be honest, mm, I mean, I know a lot of people who have cleared it without coaching, but it might be kind of scathing. But to be honest, I didn't feel like any of the coachings are actually good for SS. Okay. Uh, like I whatever, like I haven't tried all the coachings, but I tried like a couple or so, and I didn't feel like जितना पीजी में हमारा अच्छा होता है, जैसे पीजी में हमारा लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफर वेरी गुड कोचिंग, तो उतना रोबस्ट, मतलब ऑब्वियसली इट्स एन अपकमिंग स्पेस, एजुकेटिव स्पेस, तो अभी तक उतना डेवलप भी नहीं हुआ है, बट उतना मेरे को अच्छा नहीं लगा सारे, मतलब इन जनरल। बट टेस्ट सीरीज मेरे को काफी अच्छे लगे थे। टेस्ट सीरीज मैंने दो तीन, मतलब काफी, मतलब ट्राई किए थे, बट मतलब स्पेसिफिकली अगर बोलूँ तो प्रेप लैडर का मेरे को टेस्ट सीरीज पार्ट काफी अच्छा लगा। एंड ऑल्सो उसका ये है कि उसमें नोट्स मिल रहे थे, मतलब नो अदर कोचिंग वाज ऑफरिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हार्ड कॉपीज ऑफ एनी नोट्स, तो वो प्रेप लैडर से मिल रहा था, तो वो मैंने ले लिया था, स्पेशली जस्ट बिफोर आई टू ब्रश अप, तो वो मेरे को काफी अच्छा लगा। और इन जनरल टेस्ट सीरीज तो अच्छा था उनका, तो या। So basically, you're saying that coaching per se is not required, हाँ, but उतना मुझे लगा नहीं, क्योंकि practicing question, you या you personally liked for practicing question you can consider you liked prep ladder the most, and one या thing that you think would be good is the notes of prep ladder that you liked basically या because it's something which is not being offered by any या other. या एंड उनका अच्छा ही था, उनका अच्छा था, मतलब नोट्स So अच्छा। that is one thing. So anyone who's preparing for And NEET, another thing why I would say is because my specialty, rheumat as such, is one specialty where in general बहुत सारे teachers नहीं है specialty पढ़ाने के लिए. So that is another reason where I might have felt disappointed that in was the reason general. आपको इतना कोई per se कोई coaching हाँ theoretically इतनी अच्छी नहीं लगी per se, like you know हाँ video wise जो जैसे लोग कर रहे होते हैं वो आपको अच्छी नहीं लगी होगी. Fair point. So I think what I can say, if someone is preparing for rheumatoid, it's a highly demanded specialty. कि I don't think that कि अब coaching भी आ गई है तो coaching is very necessary. But yes, test series helps. Prepladder test series helped Vishnu a lot. The notes helped him a lot. The notes of Prepladder helped him a lot. So you can consider joining a coaching for whichever coaching for that matter. But you can consider joining coaching for test series. That helps, I guess. That is the yeah one that helps. yeah So वो कर सकते हो, but don't be like कि यार अब कोचिंग आ गई है तो मेरे को कोचिंग लेनी है, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है. हाँ, ऐसे कुछ नहीं है, मतलब एज मच एज आजकल नीट पीजी में काफी नेसेसरी हो गया है और इन जनरल अच्छे भी हैं, एसएस में आई डिडंट फील इन अ सिमिलर वे। So a lot of people don't know about NEET SS, INI SS. So the first thing I will ask, how is NEET SS different from INI SS as far as let's say preparation is concerned and toughness of the exam is concerned? So yeah, this is a very important thing, especially those obviously preparing for IN for SS as such. So abhi primary differences in the pattern. NEET SS is basically 150 questions of your feeder. Like if you're giving an adult rheumat or an adult endo, whatever, all of that has a same exam of 150 questions of general medicine. And INI asks you to choose your branch before itself. Like you'll have to choose if you're going to do endo or neuro or cardio, whatever. So you'll have to be decently thorough with your specialty itself, which is 50 questions of specialty and 30 of general in INI and 150 of general in NEET. So this time as such for everybody it was convenient in a way कि NEET SS पहले हो गया सितंबर में और नवंबर में INI था, तो everybody had was done with their general part by NEET SS, they were kind of sure, और उसके बाद And like one they month did their specialty in those 2 months. Yeah, and another very important thing which I feel is NEET SS is definitely less predictable compared to INI in terms of questions.
मतलब INI में, एंड द रीजन बेसिकली अगेन इज द नंबर ऑफ फैकल्टी और द पीपल प्रिपेयरिंग द क्वेश्चंस। INI में एक सेट नंबर ऑफ लाइक जहां से भी पेपर आता है, मतलब बट जैसे अगर मान लो एम्स से न्यूनेट का पेपर सेट हो रहा है, तो वो पेपर आएगा एम्स प्रोटोकॉल से ही, या एक सेलेक्ट सेट ऑफ टॉपिक से ही आएगा हर साल। वो जो तो पीजी में फॉलो हो रहा होता है, एम्स पीजी में हो रहा होता है एग्जैक्टली। टॉपिक्स, प्रीवियस क्वेश्चन। या या एंड आई थिंक इट इज इवन मोर इन एसएस एसएस में तो बिकॉज या फ्रैंकली मेरे पीट सॉन्ग के पेपर में आई रिमेंबर देयर वर एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस व्हिच वर लिटरली रिपीट फ्रॉम द पास्ट 6 मंथ पेपर। तो मैंने मतलब टू बी फ्रैंक INI के लिए एज आई सेड ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया, और जनरल मेडिसिन पोर्शन के लिए लिटरली मैंने अपने जूनियर को मतलब कॉल पे, ऑन कॉल वी डिस्कस दैट लास्ट 2 पेपर्स ऑन कॉल ट्वाइस। तो बस, और उनमें से 4 क्वेश्चन आ गए थे, तो मतलब दैट इज, एंड दोज क्वेश्चंस आर नॉट द इजी वंस। वो ऐसे हैं जो एक्चुअल डिफरेंशिएट, मतलब अगर किसी ने नहीं किया, वो 4 में से 2 तो गलत होंगे उनके, तो काफी डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो ये नीट में नहीं है। लाइक फॉर नीट एसेस एज वेल व्हाट आई डन इज, मैंने प्रीवियस टॉपिक्स किए, प्रीवियस टॉप क्वेश्चंस लिए और सबके नोट्स बनाए थे, ओनली आंसर, मतलब ये क्वेश्चन ये आंसर, ताकि वो तो मेरा रट रट गया होगा। बट उससे यार मतलब हार्डली 1-2 क्वेश्चन आए थे 150 में से, मतलब टॉपिक्स वो भी बता रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आए। तो एसेंशियली आई फील INI इज एन इजियर एग्जाम टू प्रिपेयर फॉर, if not to crack, because seats come है, तो it's an easier exam to prepare for. Or I mean I don't know if of how accurate an assessment this is, but इस बार जैसे मैं मतलब टॉपर्स के इंटरव्यूज देख रहा हूँ INI के एटसेट्रा, मोस्ट ऑफ द पीपल आर दोज हु डिडंट क्लियर नीट वेल। मतलब मोस्ट ऑफ देम आर लाइक, जैसे मतलब 250 300 रैंक आई है। सो दैट इज अनदर थिंग, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट आई थिंक इट्स लाइक लोग INI को उतना मतलब, आई डोंट नो, दे आर गेटिंग कि यार ये बहुत टफ है, या हम नीट ही दे देते हैं, हम नीट में सेफ है। बट इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब अगर तुम दे रहे हो, अगर तुम नीट में 20-30 ला रहे हो, उससे सेम ही उतना ही एफर्ट में तुम्हारा INI निकल जाएगा, क्योंकि इट्स नॉट ओनली इजियर बट एसेंशियली वही है रेशियो ना, क्योंकि मतलब सब्जेक्ट वाइज करो तो। fair point. So basically, for a person who's preparing for NEET, they have to prepare for the entire specialty. या Medicine, if they want to do adult या rehab, like you want to do adult. वास्ट भी है नीट एसएस का प्रेप। So my question to you, Conru, basically is basically the most important question that people keep on asking कि ये peach to adult transition जो है, not the DM exam, not the practice transition. How did you हम्म do medicine? मतलब you had done your pediatrics, you had done you हम्म had medicine. For NEET SS, you probably would have to read Harrison. How did you हम्म for a period of 1 year, or did you, हम्म know, कुछ snippets किए थे या क्या हम्म। किया? What did you do? तो सबसे पहली बात तो जब व्हेन आई मेड द डिसीजन व्हिच वाज अराउंड, मतलब जब मैं पीड्स एंटर किया, आई वाज लाइक मेरा बहुत चांस है कि मैं अडल्ट जाऊं, काफी मेरा इंक्लिनेशन था, बट आई थॉट आई ऑल्सो ट्राई टू गिव pediatric branches a fair shot. I'll do my work well and see if I like anything, then I might like continue. Basically, I wanted to do adult HMAT, but over Yeah, a period of time, yeah, I like तेरा उल्टा saw हुआ मेरा kind of उल्टा हो somewhat. गया. I wanted to do adult HMAT जब मैंने PED ज्वाइन की थी, but over a time I was like, नहीं, PED song is the better branch for me actually. Yeah, yeah, yeah. तो ऐसे मैंने, but I did like branches, but they were branches like peds endo, peds rheumat, where essentially there wasn't so much of like, even I didn't like the spectrum somewhat, but I also felt there wasn't as much awareness and the caseload in those branches which I was liking. So I thought I'll give it a shot. और तब उसके बाद पैटर्न चेंज हुआ। इनिशियली इवन द नीट एसेस पैटर्न वाज द सेम, 60 स्पेशलिटी एंड 40 जनरल। सो दैट वाज एसेंशियली इजियर फॉर समवन ट्रांजिशनिंग, क्योंकि उसको फिर इतना मेडिसिन नहीं पढ़ना पड़ता, और वो 40 क्वेश्चंस उतने डिफरेंशिएटिंग नहीं होते थे। मतलब देवर थिंग्स विच तुम अपना पीजी, मतलब पीजी प्रेप लेवल का स्टफ पढ़ लो, और Okay. उसी में हो जाता था। मतलब अगर कोई पीड्स बंदा है, ही कैन जस्ट गो थ्रू हिज पीजी प्रेप वाले मेडिसिन के MD नोट्स। में जो मेडिसिन के जो नोट्स हाँ थे, के नोट्स हैं let's हाँ, say. जो भी थमीम नोट्स हैं, या जो भी नोट्स हैं, जो भी पढ़ते थे वो, मतलब टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो मतलब कहाँ पे है मेरा, बट आई मतलब ये कोई वो नहीं है, इसके चैनल पे वो ऐसा नहीं है, बट अगेन आई एक्चुअली रेड फर्स्ट एड फॉर माई एसएस।
अब इतना वो होना पड़ता है ना, थोड़ा यार मन हाँ पे यार, बोलते हैं। whenever you say the word first aid, people are like, कैसे बोल दिया, क्यों बोल दिया, गलत नहीं बोल नहीं, दिया। अब मैंने सच में पढ़ा है, मतलब जो यार, अब उसमें मरमर्स इतने अच्छे से दिए हैं, मतलब क्यों अब मैं नया खोद के पढ़ लूं। मतलब उसमें मतलब मेरे एडेड पढ़ा भी हुआ है। है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वही पढ़ो। हाँ, मेरा पहले भी पढ़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई ऐसे प्रिपेयर शुरू कर रहा है तो फर्स्ट एड पढ़ लो, ऐसा नहीं है। बट Because मेरा he इतना was पढ़ा looking हुआ है, for your इतना, PG entrance basically, that's why. या आई वॉज रीडिंग इट फॉर, मतलब इवन आई नो एसएस पीपल हु हैव रेड देयर पीजी प्रेप वाले नोट्स। अब मेरे केस में वो फर्स्ट एड था, बट एसेंशली हाँ, तो ऐसे वो भी पढ़ा था, तो मैंने ऐसे, मतलब इट इज नॉट लाइक कि मतलब अब यार वही है, मतलब ठीक है पढ़ा था, फर्स्ट एड तो पढ़ा था। Chalo, I'll move on. So basically, what you're saying is कि earlier it was easy because you could actually do just your हाँ के मेडिसिन के नोट्स, बट हाँ अभी कैसे किया जब एकदम ही पूरा 150 क्वेश्चन मेडिसिन। यार, टू बी, हाँ, तो क्या हुआ कि ये जो पैटर्न चेंज है ये हुआ, इट केम टू अस कि ये होने वाला है इन अराउंड जैन दिस ईयर। तो उस टाइम आई वाज ऑलरेडी इन इन द मिडवे ऑफ माय प्रेप। तो जब ये हुआ तो आई हैड, मतलब मेरा पास ऑलमोस्ट ऑल यही ऑप्शन बचा था कि मैं इस पे एड ऑन करूं। आई कुडंट हैव लाइक कंप्लीटली रीशफल्ड माय होल प्रेप कि मैं अब हैरिसन पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मेरा प्रेप जैसे आई टोल्ड यू, आई वाज टारगेटिंग दोस। रिमार्क बेसिकली। हाँ, आई वाज टारगेटिंग रूमैट एंड 40 के मेरे प्रीवियस पीजी प्रेप के या जो भी। तो व्हाट आई डिड वाज उस पीजी प्रेप को मैंने ऐड ऑन किया विद सम अदर सोर्सेज। तो अब आई डोंट नो, मतलब वो, मतलब आई डोंट नो, आई कांट टेल कि मेरा नीट एसएस में मेरा बहुत अच्छा रैंक रहा, बिकॉज आई डोंट नो हाउ दो सोर्सेज वर्कड आउट, बट मैंने ऐसे किया। बट आई थिंक आईएनआई में दे डिड हेल्प, आईएनआई में मेरा जनरल मेडिसिन पार्ट बहुत स्मूथ था। तो या बट नीट एसएस में आई डोंट नो, थोड़ा इधर उधर। Chalo. So moving on, Vishnu, what would your advice to be someone who's prepared transitioning from MD pediatrics to MD, DM adult specialty would be कि ऐसे करो तो तुम्हारा हम्म। एग्जाम ज्यादा अच्छा निकलेगा। वुड यू एडवाइज देम कि अपनी MD pediatrics के टाइम पे हैरिसन पढ़ें, या कोई और मटेरियल यूज करें, या अगर आईएनआई देने हो तो फिर कुछ भी ना करो, एकदम स्पेसिफिक पढ़ लो तो निकल जाएगा ना ऑल दैट। व्हाट वुड योर एडवाइस बी लाइक दैट फॉर देम? नहीं, जब तुम एमडी में हो तब तो तुम नेल्सन पढ़ो, क्योंकि इट नॉट, मतलब आई नो समवन हु वाज स्टडीइंग फॉर देयर मतलब pediatric neurology till May, and then she shifted to adult neurology just a couple of months before NEET SS, and she got a very good rank of 300, like she'll get a DM neuro, adult neuro seat। So ऐसा, और she herself says कि क्योंकि मैंने नेल्सन अच्छे से, मतलब she was a very good student through her pediatrics as such, तो नेल्सन उसने अच्छे से पढ़ा था, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी उसका बहुत स्ट्रांग था, विच अगेन इज टेस्टेड इन स्पेशली ब्रांचेस लाइक न्यूरो, एंड इवन इन रोमैट पीड्स रोमैट क्वेश्चंस आर आस्क्ड। तो एंड मोस्ट एसेंशियली जब तुम एमडी कर रहे हो और तुम पेशेंट देख रहे हो, तब इट ऑल्सो गेट्स इंग्रेन्ड इन टू योर ब्रेन इफ यू आर रीडिंग द सेम थिंग। मतलब तुम पेशेंट सपोज जेआईए का देख रहे हो और घर जाके आरए पढ़ रहे हो, तो मतलब कुछ वो ना कोरिलेशन बैठेगा, ना तुमको याद रहेगा बाद में। तो तुम तब जेआईए पढ़ लो, पहले तो जेआईए अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद तुम आरए पढ़ना चाहते हो पढ़ लो। बट ऑब्वियसली टाइम का कंस्ट्रेंट होता ही है, तो तुम पहले अपना नॉर्मल नेल्सन पढ़ो, पहली बात। अनदर पार्ट, इफ इन जनरल, एक जेनेरिक पॉइंट ऑफ व्यू से शिफ्टिंग की बात करें, तो आई थिंक नाउ विद द पैटर्न चेंज it's gotten slightly tougher, but I've seen people like मेरा जूनियर है जो he just cleared in his last, like अभी जुलाई, like 4-5 months back, और उसका नीट एसएस में 50 रैंक था। ऑब्वियसली ही वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, बट अगेन इट्स, मतलब एक तो कन्विक्शन चाहिए कि मेरे को करना है तो करना है, और दूसरी बात कॉन्फिडेंस चाहिए। मतलब ये दोनों, मतलब स्पेशली जब यूर शिफ्टिंग, यू हैव अ लॉट ऑफ डाउट कि यार करूं कि मतलब नहीं वापस चले जाऊं ऐसे। तो ये दोनों चीजें अगर हो तो फिर मतलब सेट है, मतलब यू कैन, यूल क्लियर इट, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होता या कुछ। इफ यू आर हैविंग एन अलाइंड सॉर्ट ऑफ थिंकिंग, हो जाता है। अगर तुम लोग को लग रहा है कि एमडी पीडियाट्रिक्स मिल रही है, एमडी मेडिसिन नहीं मिल रही है, बट तुम्हारा अडल्ट डीएम का मन था, फॉर एनी पीजी एस्पिरेंट who's watching this, तो it maybe wasting another year is say better है that you take that MD pediatrics and you might be actually get a Yeah, really I actually the exact same thing. Like I missed MD medicine by like a handful of ranks, and I actually did the same calculation कि अभी मैं अगर फिर से एमडी मेडिसिन के लिए करूँ, सपोज मैं पीजीआई से किया, तो मैं पीजीआई से अगर मेरे को एमडी मेडिसिन करना है,
तो फिर मेरे को आई एम नॉट इवन श्योर कि 1 साल भी लगाऊं तब भी होगा या नहीं, लग मतलब जाएगी। ऐसा ही होता है। हाँ, बट अगर मैं अभी से मतलब इतने कन्विक्शन से मेहनत करूं कि उस टाइम मेरा मतलब वो यही 1 साल अगर मैं बाद में भी लगाना पड़ जाए, तो अगर मैं उस टाइम लगाऊं तो अगर मेहनत करूं तो पक्का ही निकल जाएगा। So you can actually, मतलब, you can easily, मतलब, for most people, I think the takeaway should be that you can actually switch from an MD pediatrics to an adult branch. It's not as tough as people make it out to be, and there are multiple examples. या Vishnu has डेफिनेटली। gotten a rank of third in Rumat, like a really, really hard core adult specialty. Agar, if you take NEET also, which is like, which has just MD, like, general medicine ke question, then he himself got 180 rank. Okay. And these good rank, but not a bad rank. And he junior has gotten 50th rank. So it's not that you won't be able to clear or you won't get through. You can easily just require the confidence and conviction, and maybe dropping another year just for MD medicine when you're getting MD pediatrics isn't as worthwhile अगर बाद में adult DM ही करनी है तुम्हें। तो मतलब, you should also know कि maybe हो सकता है, who knows, 1 year down the line you might not get a seat also, MD pediatrics भी ना मिले, your rank might further decrease and something on those lines. So it's a decent option. It's not something that is so. And now I feel that actually in this scenario, MD pediatrics is a very good branch या because it gives you, because it offers you ऑप्शंस। options that you can do pediatric DM, you can do adult DM, you can not नहीं do, भी करना है तो ऑसम है, नहीं करना, that PEDS option is also offers। हाँ, unfortunately not there for a lot of MD medicine people. या You know, like that option is definitely not there for a lot of MD medicine people like that way. Uh, Next question, Conru, is कि तो आपने बेसिकली ट्रांजिशन लिया, आपने काफी रिसोर्सेज ट्राई किए, यू इनिशियली रेड रुमैट, देन जब पूरा पैटर्न आया तब आपने अपने पीजी मेडिसिन वाले नोट्स निकाले और उनको थोड़ा थोड़ा ऐड किया, ज्यादा उस पे कुछ वो नहीं कर पाए, एंड अभी रुमैट आपका क्योंकि रुमैट आईएनआई के लिए सॉर्ट ऑफ या आपने, बिकॉज इट वाज मे बी माय स्ट्रॉन्ग सूट और पहले से। आपने तो रुमैट के लिए पढ़ा तो आपका आईएनआई निकल गया। वुड व्हाट वुड योर एडवाइस बी, लाइक, कि नॉट एडवाइस, आपका फ्यूचर कैसा है, मतलब अब आप फाइनली ट्रांजिशन करने वाले हो, मे बी आई शुड आस्क दिस क्वेश्चन 1 year डाउन द लाइन। हाँ। मैं अभी पूछ रहा हूँ, नहीं, आई एम, आर यू मतलब एक्साइटेड? या लाइक रोड रोड अपकमिंग रोड पूछ रहा है ना। आपको मैं नोट पूछ रहा हाँ। हूँ, मतलब आपने की तो एमडी पीडियाट्रिक्स, आपने अब तक देखे तो बच्चे ही हैं, अब हम्म। नाउ यू एंटर द वर्ल्ड ऑफ अडल्ट्स, यू विल, इंस्टेड ऑफ सेइंग लाइक यू सेड, आप जेआईए देखने की जगह आरए देखोगे, तो एक्साइटेड, नर्वस, कैसा फील कर रहे हो आप? नहीं, एक लेवल पे आई एम अवेयर ऑफ दिस थिंग कि इट विल नॉट बी एज इजी फॉर मी एज फॉर इंस्टेंस एन एमडी मेडिसिन को जितना ईज होगा टू गेट इन टू लाइक इन जनरली एमडी से डीएम में शिफ्ट करना इज अ टास्क बिकॉज यू आर इन टू अ मोर रेस्पॉन्सिबल पोजिशन एंड एवरीथिंग। मेरे लिए ऑब्वियसली इट विल बी स्लाइटली टफर देन दैट, बट वन थिंग दैट वर्कड आउट इन माई फेवर इज कि जो नीट एसएस का पैटर्न था वो जनरल मेडिसिन था, तो मेरा थियरी वाला ठीक स्ट्रांग है। मतलब आई एम, मतलब कुछ कार्डियो का आ गया तो ऐसे नहीं पूछूंगा डिजॉक्सिन क्या होता है, मतलब मेरा ऐसे थियरी वाइज ठीक है। बट ऑब्वियसली प्रैक्टिकल में आई हैव टॉक टू लाइक पीड्स people and also my seniors who have transitioned to adult endo or adult cardio like branches like that, तो उनसे पूछा मैंने, सेट की थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, 1-2 महीने, एंड इट्स यू कैन लाइक यू जस्ट लाइक मतलब सीख जाते हैं। Actually, मतलब, I will give my own personal anecdote for this. कि I'm doing my DM in pediatric oncology, but I am posted to National Cancer Institute, which adult has both हम्म। pediatric medicine, both medicine and pediatric oncology patients. So I was asked to see, well, not asked, but like, they said कि if you want, you can actually see the adults who are also having leukemias, because my expertise is in leukemias a lot. So I can see 20, 30-year, 40-year adults also who have leukemia. So the first or two three adults I saw, I was like, what the hell is happening? The maximum amount of child that you have seen is वो इतना होता है, इतना बड़ा होता है, and suddenly आप adult देखते हो, थोड़ा लगता है अजीब सा, but it wasn't a tough transition. I like by the fourth or maybe the fifth patient I was like, ठीक है, हम्म। इंसान तो इंसान ही है ना, मतलब कोई इतना तो हम सबने की है, ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं हाँ, कि, एंड आई फील कि एमबीबीएस से एमडी ट्रांजिशन टफर है, मतलब exactly, ज्यादा टफर है क्योंकि उस टाइम तक हम सिर्फ पढ़ रहे होते हैं और एमडी में you're एक्चुअली वर्किंग एज ए हेल्थ प्रोफेशनल। तो वो कर लिया तो
मतलब स्पेशली हम एमसोनियंस के लिए थोड़ा ज्यादा टफ है क्योंकि हम काफी चिल मारते हैं इंटर्नशिप में. Internship is comparatively lighter, much lighter as compared to other colleges. या तो वो भी काफी चेंज हो गया एक्चुअली पोस्ट वो ना. या पोस्ट लाइक इन द लास्ट फ्यू इयर्स इट्स गॉटन क्वाइट Hectic also. रोबस्ट. या नहीं, but yeah, definitely much more hectic than probably what we went through. या नहीं, But अच्छा है मतलब. Obviously, you have to do your internship well. It not only helps in your MD time, but also to figure out कि कहाँ जाना है बाद में. exactly. वरना एकदम clueless होते हैं कि कौन सा ब्रांच लेना है, किस ब्रांच में क्या है. So it's definitely good. Yeah, cool. Chalo, I'll tell everyone right now that Vishnu, Dr. Vishnu Conroy also has a YouTube channel. He just started it. He started with the help of, with the purpose of helping aspirants. So people do know about previous year questions as far as UG is concerned. वो तो चलो paper ही मिल जाता है. PG is concerned. For INI and for NEET, a lot of people don't have a previous year question. Apps होती हैं, Preplanter जैसे उन्होंने बताया, उसमें apps में previous year question मिल जाते हैं. But he is basically the exam that he gave, the recall like questions he has put up in those videos. Do check out his channel, and I'm sure he will come out with much more helpful content later for Yeah, PG SS aspirants, right? sure, sure. अभी actually मतलब while I was preparing, I used to search for SS recall papers, especially INI. नहीं नहीं होगा आपको कुछ. हाँ, तो मिलता ही नहीं था मुझे. मतलब एक आध कोई एक ईयर का कहीं पे दिख जाता था. ऐसे कोई एक वो भी कार्डियो का मिल गया, कहीं न्यूरो का, वो तो मतलब यूज नहीं था मुझे. आपके लिए तो ना. स्पेशली जनरल मेडिसिन पोर्शन का सबके लिए यूज होता है, जनरल मेडिसिन ऑफ INISS और नीट एसएस. तो दोज थिंग्स आई विल बी अपलोडिंग देम एंड हेल्पिंग. Thank you. Thanks a lot. Thanks for this interview. I hope people enjoyed this interview. Thank you and have a nice day.